Hi students, welcome to Chaitanya Mathematics Academy classes. This is pair of straight line chapter theorems. Okay, very important chapter, very important theorems. Okay, first year B paper का है, very important theorems. Already two theorems complete हो गया. First theorem completed and second theorem also completed. But this one is very important theorem and very repeated theorem. Okay, listen carefully. Okay, theorem number 3 and proof. Okay, so the theorem statement is the area of the triangle formed by the lines ax square plus 2hxy plus by square equal to 0 and line lx plus my plus n equals to 0. So lines, pair of straight line given and one line given. Pair of straight line means this pair of straight line is represented two lines. Okay, two lines and given one more line means the triangle is formed by these three lines and we have to find out the area of the triangle. Okay, which is formed by the three lines. Okay, area pair of straight line is represented, pair of line is two lines and this one is one more line, three lines given. So the three lines formed a triangle and we have to find out and we have to show that the area of triangle is mod of n square under root of h square minus ab by am square minus 2hlm plus bl square. Okay, so first of all let the lines are, so the lines are, the diagram is, so this is x axis and this is y axis. Clear? Okay, this is x axis and this is y axis and this is origin. Okay, so this is origin means the lines are, so see this one is one line and this one is one more line. Clear? These are the two lines. Okay, so this one is one line and this one is one line, right? OA line and this one is OB line, OA line and OB line. Okay, so see this one is one more line. Clear? This is given AB, A point, this is A point x1 comma y1 and this one is B point x2 comma y2. Clear? We have to find out these 2 points. Clear? So O point origin means 0 comma 0. O is 0 comma 0 and A point and B point. OA. Okay, lines are, so the lines represented, this pair of straight line is represented two lines. What are the lines? 2A is the line and OA is the line and OB is the line. Okay, OA and OB are the representing lines of pair of straight line means we have to write OA line and OB line and this line is given AB line. This line is given AB line. Okay, AB line is given Lx plus My plus N equals to 0. These three lines means OA bar and OB bar and AB bar. These three lines form a triangle. Okay, the three lines OA and OB and AB, थ्री लाइन्स मिलके एक ट्रायंगल को फॉर्म करे. कौन सा ट्रायंगल है वो? दिस वन, OAB is the triangle formed by the lines OA, OB and AB. We have to find out this triangle area means area of triangle OAB. Okay, so area of triangle का फार्मूला लिख रहा हूं मैं, area of triangle OAB equals to, okay, area of triangle OAB, triangle area which is passing through the origin, which is origin से start हो रहा. So area of triangle OAB is half into x1 y2 minus x2 y1. Clear? This is the formula of area of triangle OAB, which is one of the point is origin. 3 पॉइंट्स में ट्रायंगल बोले तो 3 पॉइंट्स रहते ना, 3 पॉइंट्स में एक पॉइंट ऑरिजिन रहा तो ये फार्मूला.
ओके 3 पॉइंट्स में एक पॉइंट ऑरिजिन रहा तो ये फार्मूला, अगर ऑरिजिन नहीं रहा तो फार्मूला क्या है अपने को x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, दिस इज द फार्मूला, राइट। सो ये ऑरिजिन नहीं रहा तो, अगर ऑरिजिन नहीं है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी रहा तो क्या करना, फार्मूला क्या है x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, 1 2 3 2 3 1 3 1 2, क्लियर। दिस इज द फार्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, राइट। वो पॉइंट्स 3 पॉइंट्स में अगर ऑरिजिन नहीं रहा तो ये फार्मूला, अगर एक पॉइंट ऑरिजिन रहा तो मीन्स 0 0 रहा तो एक पॉइंट क्या करना 0 सब्स्टिट्यूट कर दिए तो अपने को उसको सिंप्लीफाई कर दिए तो ये फार्मूला आता, राइट। सो एरिया ऑफ रिक्वायर्ड ट्रायंगल OAB, रिक्वायर्ड एरिया ऑफ रिक्वायर्ड ट्रायंगल OAB, आंसर इज क्या है, आंसर उसमें फार्मूला के हाफ इंटू x1 y2 माइनस x2 y1, ओके। एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB equals to, formula is half into means 1 by 2 into x1 by 2 minus x2 by 1, means we need 3 points, okay. One of the point is origin completed and next point A point and B point. A point means x1 by 1, B point is x2 by 2 means x1 by 1 x2 by 2, means now we have to find out x1 y1 point and x2 y2 point, x1 value होना y1 value होना x2 value होना y2 value होना, that means 2 points फाइंड आउट करके इसमें सब्स्टिट्यूट करके सिंप्लीफाई करें तो ये आंसर आना अपने को, क्लियर, राइट। सो let the given line, the given line is the given line, what is the given line, the given line is the given line, what is the given line, Lx plus, the given line Lx plus my plus n equals to 0, let equation number 1, okay. Let the line given line AB bar, this line is can be taken as AB, line AB bar, okay, line AB bar equals to this one and line AB, okay. Let the representing lines by the ax square plus 2hxy plus by square equals to 0 are OA line is L1x plus M1y equals to 0, okay. Next line OB line is L2x plus M2y equals to 0. Let the line equation number 2, let the line equation number 3, clear, okay. Now from 1 and 2 there is no constant means 0, there is no constant means 0, M1y plus 0, okay, right. So equals to 0 बाद में ले लेंगे अपन, right. From 1 and 2 we have to find out 1 and 2, from 1 and 2, right. So 1 and 2 means first equation is Lx plus My plus n equals to 0 and second equation is L1x plus M1y plus 0 equals to 0, from 1 and 2, okay. कौन सा लाइन्स लिया अपन, lines can be taken as L1x plus M1y equals to 0, okay. So इसमें क्या करेंगे अपन, कांस्टेंट ले लेंगे इसको, इसमें ओके, इसको कांस्टेंट लिए तो हो जाता, कंफ्यूज नहीं, ओके. सो सी द लाइन्स कैन बी टेकन एज, the lines are
first line is Lx plus My plus n equals to 0. First line is Lx plus My equals 0. So the line is there is no constant means let equals to 0. Okay, equation number 2. And in this also there is no constant means let equals to 0. कंफर्टेबल के वास्ते अपन क्या ले रहे हैं, इसको 0 लिखे, कंफर्टेबल के वास्ते उसको 0 लिए. ओके, राइट. नाउ फ्रॉम 1 and 2, from 1 and 2 we have to find out one point, and next same 1 and 3 or we can write direct point. एक point find out करना है, point find out करके direct second point लिख सकते हैं. From 1 and 2 see, 1 and 2 शॉर्टकट मैट्रिक्स डिटरमिनेंट प्रोसेस करेंगे पॉइंट फाइंड आउट करने को. जनरली पॉइंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, x कैंसिल करके y फाइंड आउट करते या y कैंसिल करके x फाइंड आउट करते. बट अपन क्या करेंगे, मैट्रिक्स मेथड में डिटरमिनेंट प्रोसेस मालूम ना, AD माइनस BC प्रोसेस में डायरेक्ट कर सकते हैं अपन. एक बार देखिए, x टर्म y टर्म कांस्टेंट, x term y term constant equals to 0, right? Write the last two coefficients and then first two coefficients. Last two coefficients क्या है, mn, okay? Last two coefficients complete, then first two coefficients. Determinant process का कर रहा हूं मैं, last two coefficients completed, then first two coefficients. First two coefficients means Lm, okay? Lm. In this from 1 and 2, 1 का कंप्लीट होगा, लास्ट टू कोएफिशिएंट्स लेना, फर्स्ट टू कोएफिशिएंट्स. ओके, इसमें भी 2, सेकंड इक्वेशन, लास्ट टू कोएफिशिएंट्स मींस m1 0 एंड नेक्स्ट फर्स्ट टू कोएफिशिएंट्स मींस L1 m1. क्लियर? ओके, लास्ट टू नंबर्स m1 0, फर्स्ट टू नंबर्स L1 m1. ओके, सो डिटरमिनेंट प्रोसेस कर रहे, राइट? दिस वन डिटरमिनेंट प्रोसेस क्या है, A B C D है, समझो 2x2 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, AD BC लिख के बीच में माइनस लेते, AD BC एक्स्ट्रा माइनस मींस ऐसे मल्टीप्लाई करें जब कंपलसरी क्या लेते हैं अपन, एक्स्ट्रा माइनस लेते हैं. ओके, AD माइनस BC. क्लियर? ओके, राइट. So the equations are in xy terms, means x equals to x by and y by and constant 1 by. Okay, right? X by. Okay, x by means m into 0 0. Okay, minus m1 into n, m into 0 0, m1 into n, m1 n and middle minus. नेक्स्ट फर्स्ट ऐसे मल्टीप्लाई करना, फर्स्ट ऐसे मल्टीप्लाई करके ऐसे नहीं करना, फर्स्ट m इंटू 0 देन m1 इंटू n एक्स्ट्रा माइनस n इंटू L1 मीन्स L1 n माइनस 0 इंटू L 0. क्लियर? नेक्स्ट Lm1 माइनस L1 m. क्लियर? m इंटू 0 एंड माइनस m1 n, n into L1 minus 0 and L into m1 minus L1 into m. x by minus m1 n and y by L1 n and equals to 1 by L m1 minus L1 m. Clear? Okay, right. Next, see, x equals to minus m1 n into 1, x term y term constant. Okay, x term y term constant means x term equals to constant लिए समझो, minus m1 n into 1 means minus m1 n by denominator is L m1 minus L1 m. क्लियर? ये y term नहीं है, समझो माइनस m1 n बाई में उधर चले गए तो इंटू होता, माइनस m1 इंटू 1 n इंटू 1 माइनस m1 n डिनोमिनेटर. नेक्स्ट y इक्वल्स टू L1 n इंटू 1 L1 n बाई डिनोमिनेटर इज L m1 माइनस L1 m. ओके, राइट? द फर्स्ट पॉइंट इज कंप्लीटेड. कैपिटल A इज देयरफॉर कैपिटल A इज द पॉइंट x1, x value means x1, y value means y1 minus m1 n by L m1 minus L1 m. Okay, next y value is L1 n by
Lm1 minus L1m. Okay, so capital A point is completed. Next capital B term दिख रहा नीचे वाला, right? Okay, next so capital A complete होगा ना, next capital B, similarly direct capital B we can write direct B value. Okay, B value direct लिख सकते हैं, 1 के जगह पे 2 ले लो, minus m2n by Lm2 minus L2m. क्लियर, एंड 1 के जगह पे 2 L2n by Lm2 minus L2m. ओके, फर्स्ट पॉइंट मीन्स 1 1 आया ना, वो 1 के जगह पे क्या लेना, 2 लेके B लिख दिए तो कंप्लीट हो जाता है कि कैपिटल A कंप्लीट एंड कैपिटल B कंप्लीट मीन्स x1 वैल्यू, y1 वैल्यू, x2 वैल्यू, y2 वैल्यू. क्लियर, फर्स्ट वन इज x1, लेट इट इज x1 value, y1 value means it can be taken as x1 comma y1 and it can be taken as x2 comma y2. Clear? Okay, now area of triangle. Okay, A point आ गया, O point 0 0 है, डायरेक्ट फार्मूला area of triangle OAB. Okay, area of triangle, right? So area of triangle OAB is answer is formula is half x1 y2 minus x2 y1. Okay, right, substitute the values. The values are 1 by 2, x1 value, what is x1 value, minus m1n. Okay, सो दिस इज नॉट कमिंग, ये स्लाइड पे ये वैल्यू नहीं आता, सो दूसरे स्लाइड पे बोलेंगे, नेक्स्ट बोर्ड पे. राइट, नेक्स्ट बी पॉइंट. ओके, इट कैन बी टेकन एज x1 वैल्यू एंड y1 वैल्यू इक्वल टू, इट कैन बी टेकन एज x1 वैल्यू y1 वैल्यू. ओके, लेट द बी पॉइंट, सिमिलरली वी कैन टेक द बी पॉइंट इज माइनस 1 कहाँ पर है, वहां पे 2 लिख दीजिए. राइट, सो एट द प्लेस ऑफ 1 वी हैव टू राइट 2 m2n by Lm2 minus L2m. ओके, कामा L2n by Lm2 minus L2m. Okay, it can be taken as x2 comma y2. Okay, now area of triangle OAB. So area of triangle OAB is half into x1 y2 minus x2 y1. Okay, x1 y2 minus x2 y1. Okay, right, so substitute the values, half into modulus of x1. What is the x1 value? x1 value means first one, minus m1n by Lm1 minus L1m. Okay, so into y2 value, right? y2 means this one, means L2n by Lm2 minus L2m. Okay, so x1 into y2, okay, minus x2 into y1. x2 value means this one, minus m2n by Lm2 minus L2m. Okay, x2 x1. Okay, सही लिखे ना. Okay, x1 and y2 value. Okay, next x2 value into y1. Okay, y1 means this one. Clear? L1n by Lm1 minus L1m. Clear? x1 value minus m1n by Lm1 minus L1m into y2. What is y2 value? L2n by Lm2 minus L2m and minus x2 value this one, minus m2n by Lm2 minus L2m into y1. y1 means this one. Okay, L1n by Lm1, L1m by Lm1 minus L1m. Right, so we have to simplify this one and we have to find out required
answer. Okay, so 1 by 2, product of numerators and product of denominators. Product of numerators means product of numerator minus L2m1 n into n square by denominator is Lm1, right, as it is, don't multiply, and L1m into Lm2 minus L2m. Okay, first one completed. Product of numerator, product of denominator, minus into minus plus, minus into minus plus, L1m2 n into n square by denominator is as it is. Okay, ये फर्स्ट लिखेंगे, बाद में ये लिखेंगे. ओके, सेम ही है ना. ओके, ये फर्स्ट लिखेंगे, राइट. सो Lm1 माइनस L1m into this one Lm2 minus L2m. Here, see, both the denominators are same. Lm1 minus L1m into Lm2 minus L2m means LCM is half into LCM. LCM is same terms, Lm1 minus L1m into Lm2 minus L2m. Okay, LCM as it is. Numerators, denominator LCM same means numerator as it is. प्लस टर्म फर्स्ट लिखेंगे, ये प्लस टर्म है ना, नहीं तो ये सेम लिख दो. न्यूमरेटर एज इट इज L2m1 n स्क्वायर प्लस L1m2 n स्क्वायर. क्लियर. ओके, प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर्स कर दिए और यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, मीन्स LCM इज Lm1, सॉरी Lm1 है ना, L1 लिख दिया मैं. ओके, Lm1 माइनस L1m, Lm2 माइनस L2m, ये भी सेम ही है ना. सो डिनोमिनेटर सेम मीन्स LCM सेम एज इट इज. सो डिनोमिनेटर LCM सेम मीन्स न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर LCM मीन्स न्यूमरेटर एज इट इज. ओके, सी फर्स्ट में देखो एक बार, numerator में पॉजिटिव वैल्यू फर्स्ट लिखेंगे एंड मोर देन दैट n स्क्वायर इज द कॉमन. ओके, सो इन फर्स्ट टर्म, इन सेकंड टर्म n स्क्वायर इज द कॉमन, मीन्स हाफ इनटू n स्क्वायर इज द कॉमन. ओके, n स्क्वायर इज द कॉमन मीन्स रिमेनिंग, राइट द पॉजिटिव टर्म L1m2 प्लस L2m1. ओके, L1m2 प्लस L2m1. ओके, L1m2 प्लस minus L2m1. okay, L1m2 minus L2m1. denominator as it is again. okay, Lm1 denominator में see from first one let minus is the common, from second one minus is the common, minus into minus plus. okay, इसमें से minus common निकल रहे, means minus is common means minus become plus term become minus term, and minus common means minus become plus term become minus term, right. so इसमें से minus common निकाल रू, इसमें से minus common निकाल रू, means minus into minus plus, minus common निकाल लिख रहे बोले तो reverse करना, right. positive term become negative term become positive term, right. let minus is the common from first one, minus is the common means L1m minus Lm1, and from second also minus is the common means L2m minus Lm2. clear. okay, right. next see 1 by 2 into n square. see this can be written as it is, this can become L1m2 minus L2m1 to the whole square. सर रूट नहीं है ना, रूट कहीं को लिखे बोले तो इसको निकाल के क्या करा, a था, a को क्या करा मैं स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर लिखा. क्लियर. a को क्या करा मैं स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर लिखा, स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ तो क्या था फिर वही था, इसको a समझो. सो क्या करा स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर. क्लियर. ओके, राइट. नेक्स्ट okay, by, so multiply the total terms L1m into L2m, L1 L2 m into m square, L1m into L2m, L1m into L2m. okay, right. next term, second one
right. So next L1m into L2m means L1 L2 m square. Okay, next same thing, first term into second, L1m into Lm2 means minus Lm L1 m2. क्लियर, L1m इंटू फर्स्ट वन कंप्लीट होगा, L1m इंटू Lm2 बोले तो थोड़ा ऑर्डर में लिखा Lm L1m2. नेक्स्ट विथ सेकंड टर्म दिस वन माइनस Lm L2 m1. ओके, द टू स्टेप्स. नेक्स्ट दिस वन माइनस इंटू माइनस प्लस Lm1 Lm2 means L square m1 m2. क्लियर, ओके, राइट. सो इसको क्या करेंगे सिंपल, इसमें ये मैं लास्ट प्रीवियस इसमें करे थे, ये यहाँ पर एक बार कर रूँ मैं यहाँ पे, राइट. प्रीवियस में क्या करे थे अपन, ax स्क्वायर प्लस 2hxy plus by square is represented by two lines. What are the lines? L1x plus m1y into L2x plus m2y. Okay, represented by the two lines. Multiply these two lines, right? L1 L2 x square. Okay, then next L1 m2 xy, L1 m2 xy. ओके, प्रीवियस थ्योरम्स में करे थे ये पार्ट, एक्चुअल फर्स्ट करना है. ओके, फर्स्ट में अपन नहीं करे तो यहाँ पे करे तो भी चलता, अपने रीजन होना अपने को, राइट. ओके, नेक्स्ट L2 m1 xy. ओके, प्लस नेक्स्ट वन m1 m2 y स्क्वायर. क्लियर, ओके. L1x into first one, L1x into second one, m1y into first one, m1y into second one. ओके, सो ये फॉर्मेशन में लिखिए L1 L2 ऑफ x स्क्वायर प्लस, इसमें से x कॉमन निकालो, L1 m2 प्लस L2 m1 ऑफ xy. ओके, प्लस L1 L2 of x square. From these two terms xy is the common, means L1 m2 plus L2 m1, and this one as it is, but m1 m2 inside, m1 m2 of y square. Okay, compare the equation, ax square plus 2hxy plus by square. Compare the equation. Okay, compare x square xy and y square coefficients. ओके, मीन्स a इक्वल्स टू L1 L2. प्रीवियस थ्योरम में करे थे, नया कुछ भी नहीं है. a इक्वल्स टू L1 L2. ओके, नेक्स्ट टू 2h इक्वल्स टू L1 M2, 2h इक्वल्स टू L1 M2 प्लस L2 M1. ओके, एंड b इक्वल्स टू M1 M2. प्रीवियस टू थ्योरम्स में ये पार्ट अपन कर दिए, सो इसमें भी करना पड़ता है. यहाँ पे इसमें सब्स्टिट्यूटेबल, तो थ्योरम में आंसर में क्या है, ए बी वैल्यू से, सो इसलिए ए वैल्यू इज L1 L2, 2h इक्वल टू L1 M2 प्लस L2 M1, b इक्वल टू M1 M2. ये डायरेक्ट लेके भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, डायरेक्ट याद रहा तो डायरेक्ट लिख सकते हैं. a इक्वल्स टू L1 L2, b इक्वल्स टू M1 M2 एंड 2h इक्वल टू L1 M2 प्लस L2 M1. ओके, राइट. ये वैल्यूज उसमें सब्स्टिट्यूट कर दो. c 1/2. okay, 1/2 into n square as it is, and this one can be written as, say this one क्या कर रहा हूँ मैं, a minus b whole square को क्या कर रहा हूँ मैं, a minus b whole square को क्या कर रहा हूँ, a plus b whole square minus 4ab लिख रहा हूँ. वो दिख रहा कि बोर्ड में, राइट. ओके, अभी आ रहा ना, दिख रहा, राइट. ओके, n स्क्वायर, सी a माइनस बी होल स्क्वायर है ना, इसको a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab लिख रो, L1 M2 प्लस L2 M1 टू दी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab, 4 इंटू a वैल्यू मीन्स L1 M2 इंटू L2 M1. क्लियर,
ए माइनस बी होल स्क्वायर को ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab, उसको सिंप्लीफाई करें तो देखो इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आता, प्लस 2ab माइनस 4ab मीन्स माइनस 2ab मीन्स प्लस 2 माइनस 2ab मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab मीन्स ए माइनस बी होल स्क्वायर. See, then in the denominator is first one L1 L2 m square, clear, this one, and in इसमें से Lm कॉमन निकालो, माइनस Lm कॉमन निकालो, माइनस Lm कॉमन निकाले तो L1 m2 प्लस L2 m1, okay, L1 m2 plus L2 m1, and this one as it is m1 m2 inside लिख रू, outside L square लिख रू, clear, okay, right. So now substitute the values 1 by 2 as it is, n square as it is, square root of, say this one can be written as 2h, L1 m2 plus L2 m1 can be written as 2h, 2h to the whole square, clear, minus 4, L1 L2 means A, m1 m2 means B, okay, L1 L2 means A, L1 into L2 can be written as A, m1 m2 can be written as B, okay, by square root of, by L1 L2 means A m square, okay, minus this can be written as 2h and plus this can be written as bl square, right. ये पार्ट क्या करो आप लोग साइड में लिख लिए तो भी चलता, ये पार्ट फार्मूला के हिसाब से लिखा, मैं कंफ्यूज मत होना, ओके. 1 by 2 एज इट इज, n स्क्वायर एज इट इज, a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्म में है, उसको मैं क्या करा, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab, a माइनस बी होल स्क्वायर, राइट. तो क्या करा मैं, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab, right, and denominator L1 L2 in bracket, from these two terms minus Lm is the common, minus Lm is the common, यहाँ पे Lm मिस हो गया, Lm मिस हो गया, यहाँ पे Lm is the common, right, and plus m1 m2 L square, m1 m2 of L square, clear, okay, right, so 2h a m square minus L1 m2 plus L2 m1 can be taken as 2L, okay, 2h, this one can be taken as 2h and this is Lm as it is, and plus m1 m2 value is bl square, clear, okay, 2h Lm plus bl square, okay, right. next one इसमें, अच्छा यहाँ पे देखो एक बार, 1 by 2 as it is, clear, okay, and square root of 2h whole square means 4h square, okay, minus 4ab by square root of, by sorry square root नहीं है, am square minus 2h Lm plus bl square, clear, plus bl square, okay. सो राइट, सो न्यूमरेटर में 4 कॉमन है ना, न्यूमरेटर में 4 कॉमन निकला तो क्या होता है, यहाँ पे लिख रूँ, फाइनल आंसर है तो इक्वल्स टू, एक ही टर्म है यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं. सो न्यूमरेटर से 4 कॉमन निकाल दूँ, 4 आउटसाइड आया तो रूट में से 4 आउटसाइड आया तो 2 होता, ओके. सो 2 ऑलरेडी यहाँ पे 2 है, 1 by 2 है, वो 2 आया तो मल्टीप्लाई होता, ओके. मॉडुलस ऑफ n स्क्वायर, ओके, n स्क्वायर इंटू h स्क्वायर, राइट. 2 आउटसाइड आ गया, सो 2 आउटसाइड आया तो क्या लिख सकते हैं अपन, राइट. सो n स्क्वायर एज इट इज, n स्क्वायर एज इट इज, एंड 4 आउटसाइड चले गया, मीन्स रिमेनिंग h स्क्वायर माइनस ab बाई डिनोमिनेटर एज इट इज am स्क्वायर माइनस 2h Lm प्लस bl स्क्वायर, okay, and 2 cancel, means the required solution is n square under root of h square minus ab by am square minus 2h Lm
प्लस BL स्क्वायर। क्लियर, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी रिपीटेड थ्योरम। ओके, सी यहाँ से और एक बार एक्सप्लेन कर दूँ मैं। सी हाफ इंटू एन स्क्वायर होगा ना, एन स्क्वायर एज इट इज एंड दिस वन आल्सो एज इट इज। सो ए माइनस बी है ना, इसको क्या करें अपन, ए कैन बी रिटन एज रूट ए स्क्वायर बिकॉज स्क्वायर रूट कैंसल मीन्स ए, राइट। सो ए माइनस बी, इसको ए समझो ब्रैकेट में, उसको क्या करें रूट ए स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए तो फिर वो सेम स्टेप आ जाता है। ये मल्टीप्लाई करें, फर्स्ट टर्म इंटू एल टू एम, फर्स्ट टर्म इंटू एल एम टू, LM1 इंटू एल टू एम, LM1 इंटू LM2। क्लियर। नेक्स्ट ये स्टार्टिंग में लिखे तो भी चलता, नहीं तो साइड में रफ में बोले तो साइड में ऐसे पेपर में राइट साइड लिख लिए तो भी चलता, राइट। सो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंटिंग टू लाइन्स, ये प्रोडक्ट करे तो ये आया, इसमें क्या करे एक्स स्क्वायर टर्म सेपरेट, एक्स वाई कॉमन निकाले, वाई स्क्वायर। ओके, सो कंपेयर करे तो a इक्वल्स टू L1 L2, 2h इक्वल टू L1 M2 प्लस L2 M1, b इक्वल टू M1 M2, राइट। ये जो ब्रैकेट में पार्ट है वो फर्स्ट में लिखे तो भी चलता, नहीं तो साइड में लिखे तो भी चलता, फर्स्ट में लिख लो, ये पार्ट फर्स्ट में लिख लो। ओके, राइट। सो 1/2 सेम, n square as it is, a minus b whole square, a minus b whole square can be written as a plus b whole square minus 4ab, a plus b whole square minus 4ab, right. Denominator L1 L2 of m square, from this two term minus Lm is the common, remaining L1 M2 plus L2 M1 and M1 M2 अंदर लिख के L square outside लिखे, n square as it is, L1 M2 plus L2 M1 can be written as 2h. Okay, this one a value and this one 2h value, okay, and this one b value. Clear? Okay, right. इसके जगह पे right 2h लिखे, right, n square L1 M2 plus L2 M1 can be taken as 2h and L1 L2 is a, M1 M2 is b, by L1 L2 is a, L1 M2 plus L2 M1 is 2h and M1 M2 is b, 1/2 सेम। ओके, बाजू में लिखा, साइड में n स्क्वायर एज इट इज, 2 स्क्वायर मीन्स 4h स्क्वायर माइनस 4ab, डिनोमिनेटर एज इट इज, एंड रूट के अंदर 4 कॉमन है, 4 कॉमन निकाले तो क्या होता, रूट से बाहर आए तो 2, बिकॉज रूट 4 वैल्यू इज 2 ऑलरेडी डिनोमिनेटर में 2 है। सो n स्क्वायर 4 चले गया, 2 कैंसिल मीन्स रिक्वायर्ड सोल्यूशन n स्क्वायर ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab बाई am स्क्वायर माइनस 2h Lm प्लस bl स्क्वायर। ओके, खाली इसमें याद रखने का क्या है पार्ट, ये जो पार्ट है ना ब्रैकेट में, ये जो ब्रैकेट में डाले सो पार्ट क्या करो आप लोग स्टार्टिंग में लिख लो। स्टार्टिंग में बोले तो अपन पॉइंट्स फाइंड आउट करने से पहले लिखे तो भी चलता। क्लियर? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, राइट। आई थिंक थ्योरम आप लोगों को समझ में आया बोल के समझ लो मैं। सो इफ़ यू लाइक द क्लास, अगर आप लोगों को क्लास अच्छा समझ में आया तो लाइक करो, शेयर करो, अगर चैनल में नया आया तो सब्सक्राइब कीजिए। रिमेनिंग थ्योरम्स नेक्स्ट क्लास।